Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. After reading the chapter number 6, today we are going to start hard words. The lesson, first of all you have to write the lesson number, then the lesson name and then the hard word. Then you have to draw the column like that. Okay, now see the number 1, prominent. Prominent means महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट. नंबर 2 इज राउज, ROUSE. राउज मीन्स उत्तेजित होना यानी उठना, गुस्से के अंदर उठना. नेक्स्ट नंबर 3 इज एस्टीम. एस्टीम मीन्स सम्मान देना यानी रिस्पेक्ट करना. नंबर 4 इज ग्रेवली, GRAVELY. ग्रेवली मीन्स गंभीरता से. Number 5 is ailed, AILED. ailed means परेशान करना. Number 6 is shroud, SHROUD. shroud means कफन. Number 7 is satisfaction. satisfaction means संतोष यानी कि satisfaction means संतोष यानी संतुष्टि. Number 8 is trickster, TRICKSTER. trickster means धोखेबाज. approaching, APPROCHING. approaching means निकट आना. Number 10 is wrapped, WRAPPED. wrapped means लपेटना या लपेटा हुआ. Okay students, you have to do all hard words in neat and clean handwriting. After doing hard work, you have to start the glossary. Here you can see number 1 is prominent. Glossary means word meaning, word and their meaning in English, that is called glossary. So prominent means significant, SIGNIFICANT. हिंदी में आपने इसका मीनिंग यहाँ देख ही लिया है. In the English, here's the word meaning is significant. Distributed, distributed means handed out यानी बांट देना. Number 3 is rouse. rouse means to get up यानी कि उठना. यहाँ इसका मीनिंग है उठना, that means कि गुस्से में उठना. Number 4 is esteem, ESTEEM. esteem means respect करना. creased, CREASED. creased means wrinkled. wrinkled यानी कि सलवटे आ जाना, creased. Number 6 is gravely. gravely means seriously. Number 7 is ailed. ailed means caused pain to. here the meaning is caused pain to यानी कि कोई पेन का कारण बनना. Number 8 is shroud, a piece of cloth that is wrapped around a dead body. यानी पीस ऑफ क्लोथ एक ऐसा कपड़ा दैट इज रैप्ड अराउंड अ डेड बॉडी, जो डेड जिसमें डेड बॉडी को लपेटा जाता है, दैट इज कॉल्ड श्राउड. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू all the glossaries and hard words in neat and clean handwriting. Thank you. Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Now here you can see, after doing the hard words and glossary, you can see here lesson 6 question answers. So let's start the question number 1. You have to write both question and answers in neat and clean handwriting. See the number 1. What method did the children employ to learn at their school? That means के children ने क्या मेथड जो थे वो एम्प्लॉय करते थे मतलब टू लर्न एट देयर स्कूल, ताकि वो स्कूल में कुछ सीख सके. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ट्स अमंग द चिल्ड्रन. टीचर जो था उनका वो क्या करता था, आपको पता ही है, चार्ट और डिस्ट्रीब्यूट कर देता था टू कॉपी एंड रीड अमंग द चिल्ड्रन. टू कॉपी एंड रीड दैट मीन्स कि जिससे बच्चों को कॉपी और रीड करना होता था. सम of the clever children learned to do sums. और उनमें से जो कुछ learned children थे, उन्होंने सम करने सीख ली on their own, that means अपने आप. others learn to read and so they taught each other. और उनमें से कईयों ने पढ़ना अपने आप सीख लिया था.
और इस तरह वे एक दूसरे को सिखाते थे एंड द ट्रिक्स्टर मैनेज देयर क्लास. ओके, once again you can see the teacher distributed the charts among the children to copy and read. Some of the clever children learned to do sums on their own, others learned to read, and so they taught each other and he managed the class. Okay, now see the number 2. When would the trickster teacher rouse himself? How would he control the students? The trickster teacher would rouse himself only when the class was really noisy. जब क्लास रियली नॉइजी हो जाती थी तभी वो ट्रिक्स्टर टीचर अपनी सीट को छोड़ कर के उठता था एंड यूज टू राउज. ही कंट्रोल द चिल्ड्रन विथ हिज लाउड वॉइस, और वो अपनी लाउड वॉइस से अपने सभी चिल्ड्रन को कंट्रोल करता था. ओके, so you have to do in your notebook. Remaining you can see in my next video. Welcome back students. Here you can see question number 3. Describe the request of the woman with the letter. That means कि आपको वो रिक्वेस्ट डिस्क्राइब करनी है जो लेटर वुमेन विद द लेटर लेकर के जो वुमेन आई थी उसकी क्या रिक्वेस्ट थी. सो हियर द आंसर इज, वन डे अ कंट्री वुमेन रिक्वेस्टेड टू द ट्रिक्स्टर टीचर टू रीड द लेटर टू हर एज इट वॉज सेंड टू हर बाय हर हस्बैंड. जो रिक्वेस्ट थी उस लेटर को लेके वो थी कि शी वॉन्ट टू रीड समवन, कि कोई उसका लेटर पढ़ के सुना दे. सो वन डे अ कंट्री वुमेन रिक्वेस्टेड टू द ट्रिक्स्टर टीचर. ट्रिक्स्टर टीचर के पास गई वो टू रीड द लेटर, कि वो उसे पढ़ के सुना दे टू हर एज इट वॉज सेंड टू हर बाय हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड ने उसे भेजा था. ओके स्टूडेंट, आफ्टर एंडिंग अ क्वेश्चन यू हैव टू लीव अ लाइन सो दैट इट can't be mashed up and it will be easy for your reading. Now see the question number 4. How did the woman express grief? Grief यानी उसने अपना दुख कैसे एक्सप्रेस किया. The country woman expressed grief by falling to her knees, tearing her robe, crying aloud and beating her broom. That means उसने अपना दुख व्यक्त करने के लिए देखिए क्या क्या किया था. फॉलिंग टू हर नी, सबसे पहले तो वो अपने घुटनों के बल गिर गई. टीयरिंग हर रोब, अपनी रोब यानी अपने कपड़े फाड़ने लग गई. क्राइंग अलाउड, और ज़ोर से चिल्लाने लगी. एंड बीटिंग हर रो, अपने रो को बीट करने लगी यानी अपना सिर फोड़ने लगी. ओके, now see the question number 5 and it is the last and the longest question, longest answer also, but it is very simple if you will understand it. Okay, so let's start. The trickster teacher was not caught in the end. How did he save himself? That means कि first of all you have to understand the meaning of the question, कि what is asking टू यू, आपसे क्या पूछा जा रहा है वो आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर. सो हियर इट इज़ आस्किंग कि द ट्रिक्स्टर टीचर वाज नॉट कॉट, यानी वो नहीं पकड़ा गया एंड में भी, तो कैसे उसने अपने आप को बचा लिया. सो इट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. सो वॉच इट केयरफुली. व्हेन द कंट्री वुमेन रिटर्न एंड शाउटेड ऑन द टीचर, इट मीन्स कि जब कंट्री वुमेन वापस आई और टीचर पर शाउट किया फॉर लाइंग टू हर, उससे झूठ बोलने के लिए, अबाउट द लेटर, लेटर के बारे में. ही शाउटेड बैक, उसने तो उस पर ही चिल्लाना चालू कर दिया. इंस्टीड ऑफ एडमिटिंग द ट्रुथ, ट्रुथ को एडमिट करने के बजाय. एट हर सेइंग दैट, और ऐसा कहने पर, ही ट्राई टू से दैट, उसने ये कहना चाहा. एट हर सेइंग दैट ही ट्राई टू से दैट, कि उसी ने उसको ये ऐसा कहने के लिए कहा था. बट शी वेंट ऑन,
मतलब वो यही कहने वाला था जो वो वुमेन अब कह रही है। उसने अपनी बात को ऐसे पलट दी ट्रिक्स्टर ने कि वो वही बात कहने वाला था, बट शी वेंट ऑन, लेकिन वो ही बोलती रही अबाउट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के बारे में कि बीइंग अलाइव और डेड, कि वो जिंदा है या मर गए। इन दिस वे ही सेव्ड हिमसेल्फ, और इस तरह ट्रिक्स्टर ने अपने आप को बचा लिया। दैट मीन्स कि द वुमेन प्लेड ए फुलिश रोल, उसने अपनी मूर्खता दिखाई। सो इन दिस वे ट्रिक्स्टर गॉट अ चांस, उसे चांस मिल गया टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने का। देखिए वंस अगेन you can see, when the country woman returned and shouted on the teacher for lying to her about the letter, he shouted back instead of admitting the truth at her, saying that he tried to say that, वो यही कहने वाला था, but she went on about her husband being alive or dead, और वो यही कहती रही कि उसके हस्बैंड जिंदा है या मर गए। In this way he saved himself. So student, it is quite long but not hard, so try to learn also, okay, and you have to write in your notebook in neat and clean handwriting. Thank you. Hello students, welcome to Bal Govindam learning app. After doing the hard words, glossary and question answer, reading the chapter, today we are going to start some exercises of the chapter number 6. They are on the page number 49. Okay, so open your book at page number 49. Now here you can see, choose the correct option and fill in the blanks. If student you had read the chapter thoroughly, you can easily choose which one is correct. Okay, so let's start. Number 1 is, the trickster teacher could neither dash nor dash. That means वो क्या नहीं कर सकता था? Read and write, sing or dance. Yes, you know it very well कि he can't read and write. So neither and nor means ना तो वो पढ़ सकता था और ना ही वो लिख सकता था. Then number 2, the trickster teacher wore an oversized dash hat or turban. क्या पहन रखी थी? Yes, he wore a turban. उसने टर्बन पहन रखी थी. So the turban is the right option. Number 3, the trickster teacher distributed dash among the children of his school. क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे? चार्ट्स एंड टेबल्स और पेंसिल एंड बुक्स. Yes, he distributed charts and tables, tablets. The parents of the students held a trickster teacher in highest dashed esteem or position. Yes, highest esteem. The husband was actually sending present wrapped in a dash blanket or gift wrap paper. क्या गिफ्ट किस में रैप करके भेजा था? गिफ्ट रैपिंग पेपर में और ब्लैंकेट में. यस, he had sent a gift wrapped in a blanket. Okay students, so this is exercise number 1. Now turn your page. Here you have to come on the page number 51. Here you can see the exercise. Change the sentence from assertive to negative. Okay, so whenever these all sentences are related to the past tense, in the past tense, whenever we have to make the negative sentence, we will use did just before not. Now here you can see, Meeta went to Kolkata. यानी मीता कोलकाता गई. मीता did not go to Kolkata. Here you can see कि when we are changing the sentence into negative form, the verb second form will change into the verb first form. Here went change into go. You can see, or all exercises you have to do like that.
We will do it in our next video. Welcome back, students. Here you can see the number 2. They won the match. They won the match, and you have to change it into the negative form. So they did not win the match. Here the verb win, that was in the won, and it is again changed into the win. They won the match. They did not win the match. Number 3, the boys sang melodiously. The boys did not sing melodiously. Again, sang is changed into the verb first form, sing. The policeman ran after the thief. The policeman did not run after the thief. Here you can notice that in each and every sentence, when we are changing it into the negative form, we are using did not, and the second thing that is going to change, that is the verb second form change again into the verb first form. Now in the number 5, I saw the movie. I did not see the movie. She seemed very interested. She did not seem very interested. Okay, students, it is on the page number 51, and turn it. Come on, the top of page number 52. Here you can see number 7. He heard the bell ring. He did not hear the bell ring. Again, the verb second form heard is going to change here. We played basketball yesterday. We did not play basketball yesterday. She lived in Mumbai. She did not live in Mumbai. We sang at the function. We did not sing at the function. In all sentence, you can notice we are making 2 changes. First, we are adding did not, and the second is we are changing the verb that is in the verb second form, and we are changing it in the verb first form, and in this way we can make the negative sentence. Okay, you have to do all exercises in only book. Thank you.